Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher for class 7. Today we have new chapter. Open page number 103. Chapter number 9, A Voice in the Dark. The snow was still deep and the mornings and evenings cold when. बर्फ़ बहुत गहरी थी और सुबह और शामें ठंडी थी. A week after this, एक हफ्ते बाद, we reached Ottawa. हम ऑटवा पहुंच गए. This slow travelling was not at all to my liking, and I often persuaded my companion to make more haste towards Winnipeg. सफ़र बहुत आहिस्ता था जो मुझे पसंद नहीं था और मैं अपने साथी को तेज़ी से विनीपेग की तरफ जाने के लिए कायल कर रहा था. This he agreed to do. वो ये करने के लिए मान गया. So the next morning we jumped a freight train. तो अगली सुबह हम एक माल गाड़ी पर सवार हो गए. Determined to hold it for the whole day. और हमने पूरा दिन उसी पर सवार रहने का फ़ैसला किया. Unfortunately, बदकिस्मती से, it was simply a local train and being very slow. वो एक लोकल ट्रेन थी और उसकी रफ्तार बहुत ही आहिस्ता थी. Having to stop on the way at every insignificant little station, वो हर छोटे स्टेशन पर बार बार रुक रही थी. We left it. हम उससे उतर गए. At a town called Renfrew के मुकाम पर. Intending that night to beat a fast overland passenger train, which would convey us 400 or 500 miles before daybreak. हम चाहते थे कि एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर ट्रेन पर सवार हो जाएं जो हमें सुबह सादिक से पहले 4 से 5 मील तक पहुंचा दे. With this object, we sat in the station's waiting room until evening. इसी इरादे के साथ हम स्टेशन के वेटिंग रूम में शाम तक बैठे. And then, some 20 minutes before the train became due, we slipped out unobserved and took possession of an empty car, stationary some distance away, from which place we could see the train coming and yet be unseen from the station's platform. ट्रेन के आने से 20 मिनट पहले हम छुप छुपाकर एक डब्बे में बैठ गए जो कुछ फासले पर खाली खड़ा था. उसी जगह से हम आती हुई ट्रेन को देख सकते थे लेकिन हमें प्लेटफॉर्म से देखा नहीं जा सकता था. This train would soon arrive. वो ट्रेन जल्द ही आने वाली थी. For passengers were already pacing the platform. मुसाफिर उस ट्रेन पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे. The luggage was placed in readiness. सामान को चढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा था. And a number of curious people having nothing else to do. और कुछ फालतू लोग ट्रेन को देखने की तजस्सुस में प्लेटफॉर्म पर जमा होना शुरू हो गए थे. Had assembled here to see the coming and going of the train. At last, we heard its whistle, and looking out, we saw the headlight in the distance, drawing nearer and nearer. आखिरकार हमने ट्रेन की सीटी सुनी. हमने दूर से ट्रेन की हेडलाइट को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी. It steamed into the station without making much noise, for the rails were slippery. There still much wing ice and snow on the track. ट्रेन धुआं उड़ाती हुई स्टेशन में दाखिल हुई बगैर किसी शोर के. रेल की पटरियां अब भी बहुत स्लिपरी थी और बर्फ़ से ढकी हुई थी. Now I am going to give you the homework of this lesson. Open your English text copy, draw a margin line, mention date, write unit number, unit name, A Voice in the Dark. Question number 1. What time of year was it when this incident took place? How do you know? Answer. The incident took place during winter. We know it because author mentioned that the snow was still deep and the mornings and evenings were cold and there was still much ice and snow on the track. Question number 2. What kind of train was it? Diesel, electric or steam? How do you know? Answer. It was a steam train. It steamed into the station. Also it has a whistle, a fireman and engineer put together. These things indicate that it was a steam train. This is the end of today's lecture. Complete your homework and submit it on coming Saturday. Thank you. Allah Hafiz.